Hanji, good morning. Hope all of you are doing good. Now, this is the pathology recall session for the recently conducted Fmge exam on 26th of July. And as far as the exam goes, I suppose uh, the inputs which I've got from the students after interacting with them, I got to know that the exam was a little moderate kind of an exam where paper number one seems a little tough in comparison to paper number two. And overall, the feeling which we have is that uh, the result should be good. And however the exam was, it's done. So there's no point talking about it. And this is just a recall of pathology questions which I got from the students. Before I show you the questions or we discuss about them, I just want to, first of all, thank the students who have sent me the questions. And secondly, I have not framed any question. Even the options I have not added. Whatever has been told to me, I've kept it like that. So if you are watching it right now or you're going to watch it later, whoever sees it later, it's just a request from my side that please put up if you know the options of the question or the framing of the question. So please let me know in the comment section because it's going to help the students who are going to see this the next time. Okay. Uh, the first question which came was regarding the pro-apoptotic gene from the cell injury. Okay. So pro-apoptotic gene they asked, and what I could get from the question, you just have to let me know that whether the question was there or not. So, which among the following is a pro-apoptotic gene? So, we have done this, during our session of pathology classes in chapter number one, where we discuss all about apoptosis. You can see and find on the workbook page number 18, where we discussed about these genes. And in this, we have clearly mentioned that the pro-apoptotic genes. So, anything having A in the center, only one exception, and that was bad. It has A in the center, but still it behaves like a sensor. And for anti-apoptotic, we discussed that anything having a long life, L at the end, long life, it's an anti-apoptotic gene. So, uh, bad, it's a sensor. Then BCL2 containing L at the end. So obviously, no point this being an answer. And the correct answer for this particular question uh, would be your C. This is going to be the first answer. Okay, so if there was an option with BCLXL, ठीक है मतलब आप किसी भी ऑप्शन को चेंज कर सकते हो, but then it is BCL, so again it's an anti-apoptotic, so कोई point ही नहीं है. So this question we have seen during the class. So then the second question was this, where Barrett's esophagus and type of metaplasia has been asked. And these options also were given by the student itself. Squamous to intestinal epithelium or columnar to squamous, squamous to cuboidal or intestinal to squamous epithelium. So was the question, what was the framing of the question and how exactly it has been asked? If you can help me with, please write down in the comment section later. It will really help. But for Barrett's esophagus, we had a very, detailed discussion in the classes. You can see on page number 13 of your workbook, where we have discussed Barrett's. And in Barrett's, we have seen that it's an example of columnar metaplasia. And we always say that, Barrett's is also called as intestinal columnar metaplasia, where in the esophagus, normal cells should be squamous, and now they're converting into a columnar cell. And because the hallmark of Barrett's is goblet cell, and goblet cells, they are generally more commonly or in numbers, they are present in the intestine, so it is also called as intestinal metaplasia. ठीक है. तो अगर ऐसे ही था गिरीश, तो then the answer is A, squamous to intestinal. Then the third question, was there a question of, on something called as, regarding these enzymes which we had discussed for a free radical?
those catalase, peroxidase, glutathione peroxidase, and SOD. So there was something for a free radical remover. ऐसा कोई क्वेश्चन था? ओके बीम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इंटेस्टाइनल तुम कह रहे हो कि नहीं दिया हुआ है, इट वाज स्ट्रेट कॉलमनर। ठीक है, तो भी चलेगा। ओके, तो was there a question? Okay, Mimansha. So as you are saying that uh, there was a question of free radical remover, something like that, right? And what was the exact question? I mean, they asked, they gave the name of the enzymes and they asked that, which enzyme helps in removal of a free radical, something like that. ठीक है पीयूष, reactive oxygen species के लिए था वो, that's okay, but what exactly were they asking? Okay, so they were just asking the remover of a free radical like that. Okay, so फिर अगर I don't know about the other options, but the student who gave me this question said कि sir directly मतलब no other enzyme was from the list you have given us, and the only option which we could mark in that was glutathione peroxidase. So if यार मेरे को भी लगता है कि देना चाहिए उन लोगों को that what which questions came and what was the correct answer. I also feel the same that you should get it, and what I heard was कि ऐसा कुछ in the court or something ऐसा हुआ है कि paper should be told to the students. Let's hope for the best. चलो, तो ये भी अपन ने पेज नंबर 25 ऑफ योर वर्कबुक अगर आप देखेंगे मिस वर्कबुक, तो आपको मिल जाएगा ये, है ना, that glutathione peroxidase converts H2O2 into water and oxygen. तो ये भी हमने किया है, remover of a free radical. So these are three questions which I could get from chapter number one, okay, जो मेरे को बताया गया है. Then uh, अच्छा, thiamine भी था, ठीक है. तो वो मैं ऐड कर दूंगा वहां पे. Then a kidney biopsy shows apple green birefringence on Congo red stain. What is the most likely diagnosis? So amyloidosis पे straight away question था ये. And people were telling me that because apple green birefringence was given and kidney was given, so we could understand. And you can go and see on your page number 56 of your workbook, जहाँ पे अपन ने साफ साफ लिखा है in amyloidosis that you get apple green birefringence on an electron microscope, on a polarized microscopy on a Congo red staining. ठीक है, तो ये straight up question हो गया. So again, the answer for this is simple, amyloidosis. तो अभी तक आप देखो, the kind of questions which we are getting, they are doable questions, है ना, कोई ऐसा problem नहीं है इसके अंदर. Then was this question there? Blood transfusion reaction are an example of which type of hypersensitivity? Because 3, 4 people gave me this question that said there was a question on a blood transfusion reaction, and 1 or 2 people said, "Ki, sir, we're not exactly sure that whether this came or not." So was this a question in the exam? Please let me know about it. कि ये question आया था क्या exam में? On a blood transfusion reaction. Okay, so I'll cut this question. This was not there, so no hypersensitivity question was there in the exam, so we'll cut it out, no problem. Then this question, which antibody is first to appear in a primary immune response? Did they ask about the antibody first to appear in a primary immune response? Was this a question? Because this has been given to me. Okay, okay, Mimansha. ठीक है, तो इसके अंदर then the answer is pretty simple. We have done this when I teach you the B cell on page number 49. If you go and see, तो आप देख सकते हो कि here we discuss about the B cell activation, and वहाँ पे अपन सारी antibodies के बारे में बात करते हैं. We talk about all the antibodies, and there we have discussed that the IgM antibody is always an antibody which is for acute infections. ठीक है, तो अपन we always talk about this. So answer is pretty simple for that. This is IgM. So 5 questions till now you have said that there was there. No problem.
फिर ये क्वेश्चन था क्या यार, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए किडनी ट्रांसप्लांट 5 डे, फिफ्थ डे of kidney transplant and the patient is coming with some inflammatory changes or a sepsis happening in a patient. What is the reason for this? Something, people said that there was some option of graft versus host disease or T cell damaging the graft or something like that. The question was there. Was this the question in the main exam? Okay, Girish. ठीक है. If this was the question in the main exam, then you know कि fifth day है यार. ठीक है. And depending upon अगर वो hypersensitivity पूछते, situation would have been different. But people said कि सर hypersensitivity नहीं पूछा था. They didn't ask कि ये type 1 है, type 2 है, type 3 है, type 4 है. So they were just asking that, in a graft rejection, what are the cells which are basically primarily working? तो ये भी आप देखो कि for a graft rejection, we have completely, done this, that there are three kinds of graft rejection: hyperacute, acute, and chronic. And I have said that, if it's an hyperacute graft rejection, तो within hours होगा वो. And then afterwards, it's all acute. And we have said this, that for a graft rejection, I said that antibodies and T cells, they are important, but the major cell for a graft rejection will always be a T cell, the most important one. ठीक है. ठीक है बेटा. Okay, Bhim. So Bhim, you are saying that there was the answer for this question will be T cell defect, है ना? It's a T cell defect for a graft rejection. Now, Bhim, as I say, you are saying hypersensitivity, one question image based, and mentioned nerve involved pigmentation and which type of hypersensitivity. So probably lepra पे question आया था. So if instead of you know talking about that ये blood transfusion, I think lepra reaction के ऊपर question आया था then. Okay. ठीक है, तो अगर इसके अंदर टी सेल डिफेक्ट वाज नॉट अ सेपरेट ऑप्शन, तो टी सेल डिफेक्ट और टी सेल डैमेजिंग द ग्राफ्ट ऐसा कुछ लिखा था. ठीक है, तो लेप्रा के ऊपर क्वेश्चन आया था एंड ये भी था. तो बेसिकली देयर वाज अ हाइपरसेंसिटिविटी क्वेश्चन. ठीक है, तो अभी तक लेप्रा के लिए, हाँ ठीक है, तो लेप्रा के लिए भी वी हैव डिस्कस्ड दैट लेप्रा टाइप 1 is your type 3 hypersensitivity reaction, and lepra type 2, well, lepra type 2 is a type 3 hypersensitivity reaction, and lepra type 1 is type 4 hypersensitivity reaction. तो ये जो अपन examples लिखते हैं hypersensitivity में, there we have discussed rule of 5, I have told you, right? तो if that was the case, then types, ठीक, तो इसको अपन चेंज कर देंगे, विल चेंज इट. बट देयर वाज अ क्वेश्चन एंड आई होप एवरीवन हैज डन दिस क्वेश्चन करेक्टली. सो अभी तक 7 क्वेश्चंस हैं एंड ऑल हैव कम, है ना? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जगह लेप्रा आया था. So that's okay. Then there was this question, adult female abdominal discomfort की history थी, and then they said that the surgery was done and this kind of a specimen was seen, where, yeah, where what is it? They directly ask कि ये क्या है, and two options people gave me कि सर हम देखते ही समझ गए थे because they were here, and some said teeth भी था उसके अंदर, and I could not find the image actual, तो मैंने ये डाल दिया यहाँ पे, but it was a teratoma. People said it was a teratoma, तो correct हो गया वो directly. ठीक है, ये भी अपन ने किया हुआ है बेटा, है ना? इफ यू सी द चैप्टर ऑफ नियोप्लेजिया, सो पेज नंबर 61 पे अगर आप देखोगे तो वी हैव डिस्कस कि ये टेराटोमा होता है विच इज ड्यू टू मल्टीपल जर्म लेयर्स, टू और मोर जर्म लेयर्स डेरिवेटिव टुगेदर, एंड three types of teratoma. This was the image of teratoma we have discussed with each other. All right. Then there was a question on caretaker tumor suppressor gene, something like that, कि ये options थे P53, RB, not बताया मेरे को, that these kind of options were there. Something to do with caretaker tumor suppressor gene. They have said something like that. So please let me know कि ये question था क्या. ठीक है, हिंदी में ही बोल दूंगा मैं, दोनों दोनों में बोल दूंगा. ठीक है, तो अगर केयर टेकर सप्रेसर जीन वाज देयर इन द ऑप्शन, अब इन द क्वेश्चन, तो अपन ने किया है बेटा ट्यूमर सप्रेसर जीन के लिए. वी ऑलवेज इफ यू रिमेम्बर, वी ऑलवेज मेक अ एक टेबल है
जिसमें वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, P53, RB, NF1, NF2, वो पूरा टेबल अपन याद करते हैं। P53 के लिए वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि ये गार्जियन है जीनोम का, है ना, इट्स अ गार्जियन ऑफ द जीनोम। तो on page number 67 you can find out, and according to that the answer has to be ठीक है, P53। तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन था, बहुत अच्छी बात है। देन देयर वर टू क्वेश्चंस मार्फन सिंड्रोम के ऊपर, ठीक है। म्यूटेशन इन FBN1 जीन, व्हाट हैव बीन टोल्ड टू मी, ये ऐसे ही मेरे को बोला था, एंड आई हैव पुट दीस क्वेश्चंस एज इट इज, कि सर एक क्वेश्चन आया था जिसमें FBN1 जीन वाज मेंशन्ड and they asked the diagnosis. And second question आया था जिसमें the clinical features of Marfan syndrome were mentioned and they asked the diagnosis. So please let me know. Please let me know कि exactly क्या situation था। नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन था, दैट्स ओके, बट डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने? मतलब they gave FBN1 gene mutation and they asked that what is the answer? Okay, options were collagen fiber and all. Okay, so but they asked, they gave the FBN1 gene in the history, right? Okay, fibrillin दिया था, just the gene mutation was given and they were asking the डायग्नोसिस। तो एक क्वेश्चन तो हो गया, तो इसमें तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये देखो, ऑन पेज नंबर 91 ऑफ योर वर्कबुक अपन करते हैं पूरा मार्फन के बारे में, वेदर निमोनिक्स आर गिवन फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के साथ अपन करते हैं ना, क्राइटेरिया पढ़ते हैं, पूरा मार्फन जीन पढ़ते हैं, मतलब मार्फन सिंड्रोम, एंड देन इंडिविजुअली वी हैव डन कि FBN1 है, वो FBN2 भी नहीं होता है। सो आई हैव टोल्ड यू दैट। तो ये तो अपन ने कर लिया, तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन फॉर मार्फल? वर दे वन क्वेश्चन और टू क्वेश्चंस? पहले तो ये बताओ, जस्ट राइट वन और टू, कि was there one question or there were two questions? Because somebody said कि दो क्वेश्चन आए थे, some people said कि एक आया था, तो I don't know whether you know how। अच्छा, एक क्लिनिकल फीचर्स के साथ भी आया था। ओके, तो उसमें भी अगेन they were asking the diagnosis? Were they asking the diagnosis in that also? ठीक है, डर्मोइड भी डाल देंगे अपन, we will put it there। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर अगर दो आए थे तो भी तुमने कर दिया होगा ना, बिकॉज क्लिनिकल हिस्ट्री वाज आस्क्ड एंड देन दे वर आस्किंग द डायग्नोसिस, तो ये भी तुम कर चुके होगे। Then the 12th question, a single transverse palmar crease in a newborn is most commonly seen in which syndrome? अभी ये सिंगल पामर क्रीज जो है भाई, ठीक है, इसके लिए वी यू नो यू कैन गो ऑन पेज नंबर 85 ऑफ योर वर्कबुक, और डाउन्स में यू probably must have remember from the classes that there are 5-6 points I give you, and then I always tell you in this child कि दो चीजें याद रखना है इसके अंदर। What are the two things you have to remember? One is the simian crease, ठीक है, जिसमें सिंगल क्रीज आती है, एंड वी जोक अबाउट इट इन द क्लास, एंड देन देयर इज अ सैंडल गैप वेयर द फर्स्ट टू एंड द ग्रेट फिंगर हैव अ वाइड गैप, ठीक है। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया ना, डाउन्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ये भी बहुत सिंपल सा था। देन फिर ये था कि न्यूबॉर्न बेबी विद फ्लैट फेस, वीक मसल्स, चाइनीज आई अपीयरेंस और क्रोमोसोम 5p डिलीशन वाज मेंशन्ड। डायग्नोसिस पूछा था उन्होंने, और समथिंग लाइक दैट वाज देयर। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तो मार्फन के लिए तुम बोल रहे हो इन वन क्वेश्चन देयर वाज द मार्फन डायग्नोसिस वाज गिवन एंड फिब्रिलिन हैज टू बी चोजन कि विच जीन म्यूटेशन इज देयर, और सेकंड में इट वाज द डायग्नोसिस व्हिच दे आस्क्ड, ठीक है।
हाँ ठीक है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन था, तो ऑन पेज नंबर 86, ठीक है, अपन स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं क्राइडोकॉट सिंड्रोम। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है क्रोमोसोम 5p डिलीशन। ठीक है, अपन वी मेक अ joke about it, बिल्ली वाली cry. So like that. So the answer for this question is pretty simple. It is Craigducott syndrome. So there are 13 questions by now. Everything अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है, it is all मे बी the देखो यहाँ पे इन दिस रिकॉल सेशन इट इज अबाउट द जिस्ट दैट व्हाट हैज बीन आस्क्ड। जैसे होता है ना कि अपन ने व्हाट वी हैव रेड एंड वुड वी बी एबल टू रेसिप्रोकेट इन द मेन एग्जाम। Now, obviously, the questions which you are seeing here, they are not exactly the replica of the questions which have come in the exam. But just by looking at that question, whatever the language was given, that's a different scenario altogether. But by looking on those questions on the examination day, you were able to solve these questions. And what was the reason for it? Because you have studied in the classes. Okay. So till now, 13 questions have come, and all the questions which have been shown, आप बता रहे हो, they are, ठीक है, they are mentioned. फिर एक ये क्वेश्चन आया था, 22-year-old man presents with headache। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ही मेरे को भेजा है, सो आई पुट इट लाइक दैट ओनली। 22-year-old man presents with headache, visual disturbance, hypertension, MRI brain shows a cerebellar lesion, MRI abdomen shows solid renal mass suggestive of renal cell carcinoma, chromosomal abnormality was, ठीक है, chromosomal abnormality was asked। तो was something of this sort was asked कि भाई कौन सा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है फॉर अ रीनल सेल कार्सिनोमा। तो अगर इफ दिस क्वेश्चन वाज देयर, ठीक है, इफ द क्वेश्चन वाज देयर, दिस इज द ट्यूमर सप्रेसर जीन लिस्ट आई टोल्ड यू दैट वी ऑलवेज मेक। तो ये वो लिस्ट है, और इसके अंदर बेटा इन पैथोलॉजी आई टीच यू हियर, VHL जीन। I always make you understand also that there are three letters in VHL, and because there are three letters in VHL, so the chromosome also is 3p deletion होता है ना RCC के लिए। And when we discuss kidney in the part of medicine, there also I tell you about this VHL gene mutation, a clear renal cell carcinoma. So the answer will be, 3p deletion, ठीक, 3p deletion for an RCC। ये पेडिग्री, दे गेव द पेडिग्री, बट द पेडिग्री वाज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस वर वेरी, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस वर गिवन इन द exam, and the pedigree also, I don't know what kind of pedigree has come। इस pedigree के बारे में we have not discussed as such, so yes, it has come a little different, but ये adopted है यार। ठीक है, तो अब अगर it was a dotted line तो वो adopted in है, और अगर वो it was a hard line with a bracket तो फिर adoptive out है वो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें adopted child आंसर में है। ये क्वेश्चन we have not discussed। ठीक है, and out of 15, 14 questions we have discussed. Then 16-year-old male, delayed puberty, sparse facial hairs, gynecomastia, small testes, tall, long arms, legs, learning difficulties, genotype पूछा था। ठीक है वैष्णवी, आई विल ऐड। ठीक है मीमांशा, तो उस क्वेश्चन को अपन हटा देंगे। ये वाला क्वेश्चन था, was this question? यस, तो ये तो सिंपल हो गया ना, कि मेल ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है उन्होंने, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लैनफिल्टर सिंड्रोम, और अपन डिस्कस करते हैं क्लास में। ठीक है, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 87 वेयर वी ऑलवेज डिस्कस ऑल दिस, है ना। लॉन्ग स्टेचर, टॉल हाइट, स्पार्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, तो 47XXY है ये। ठीक है, सो दैट्स फाइन देन। फिर एक क्वेश्चन तुमने बोला है नहीं है, रीनल सेल कार्सिनोमा वाला, VHL वाला, बाकी एवरीथिंग वाज देयर, सो 16 आर देयर। अ यंग बॉय हैज बीन ईटिंग पेन सॉयल लीव्स, अ ब्लड टेस्ट इज डन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसके अंदर यार ये लेड पॉइजनिंग है। ठीक है, देखो आईडिया में तो ये हो नहीं सकता, थैलेसीमिया माइनर के अंदर भी ये नहीं होगा, बिकॉज द सेल्स आर डिफरेंट। सिकल सेल एनीमिया वाज द ऑप्शन, तो सिकल सेल भी नहीं दिख रहे। अगर आप डायरेक्ट इफ यू कुड नॉट फाइंड आउट द आंसर, तो भी यू नो आउट ऑफ रूलिंग आउट आप ये कर सकते हो कि lead poisoning was the answer for this। बहुत बढ़िया। फिर CD मार्कर पॉजिटिव फॉर क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया।
तो इसमें क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया के अंदर 5 and 23 पॉजिटिविटी हमको देखना है। देखो 1920 तो ऑब्वियसली दीज आर द मार्कर्स ऑफ अ बी सेल, ठीक है। तो अपन ने बात किया ही था। एंड वेयर आई टीच यू दिस, पेज नंबर 140, जहाँ पे नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा मैं आपको पढ़ाता हूँ। देयर वी हैड डिस्कस दैट फॉर दी मेंटल सेल लिम्फोमा के साथ डिफरेंशियल मैंने आपको दिया हुआ है इसमें सीएलएल में, इफ यू रिमेंबर हियर, कि सीएलएल के अंदर 5 and 23 पॉजिटिव होता है, वेयर एज मेंटल जोन लिम्फोमा में 23 नेगेटिव है। तो अपन याद करते हैं ना सॉक्स एंड साइकिल चलाते चलाते मेंटल लाइक दैट, वहीं से है ये, सीएलएल में सब पॉजिटिव आ जाएगा। सो द ऑप्शन विच वर गिवन, उसके हिसाब से दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस विमांशा, यू आर राइट। यस, लेट टॉक्सिसिटी एंड ये CD19, 20, 23 एंड 5 सब पॉजिटिव है इसके अंदर सीएलएल में। तो ये भी अपन ने किया है। एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, दिस वाज अ क्वेश्चन where directly we have not done in the class because this is very rarely being asked, ठीक है। लेकिन the translocations, I just want you people to put up the a little bit of concentration over the options given. Were the options like that only ki, all the options were with 8 and 1, ye 8 2, 8 22, 8 14, like that? Were the options like that? ठीक है, स्मच सेल का मेंशनिंग कर देंगे बेटा इसके अंदर, आई विल ऐड स्मच सेल। ठीक है, ऐड स्मच सेल इन द क्वेश्चन, मैं कर दूंगा बेटा इसको ऐड। एनाप्लास्टिक, वेरी गुड सुपर। ओके, तो इसके अंदर देखो, ये जो तीनों ऑप्शंस है ना, बिकॉज वी हैव नॉट डन डायरेक्टली दिस इन क्लास, बट ये जो तीनों ऑप्शंस है, ऑल दीज थ्री ऑप्शंस वी हैव डिस्कस्ड विद बर्किट्स। बर्किट में मैंने आपको कैसे याद कराया था, बी लुक्स लाइक 8 एंड बी इज अ इवन लेटर, तो सारी की सारी ट्रांसलोकेशन इवन होंगी बकेट्स के साथ, दैट इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, राइट। सो 8 2 8 22 8 14 सब कुछ इवन है, तो ये तो सारा बकेट्स का है, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी द आंसर गाइस, है ना। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, 2 5। यस, वेरी गुड, दैट्स व्हाट। चलिए, यंग बॉय हैज जॉइंट स्वेलिंग आफ्टर अ फॉल, टेस्ट शोज नॉर्मल पीटी एंड इंक्रीज एपीटीटी, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो यार ये तो अपन ने क्लास में देखो, सिंपल है ये, मैंने आपको हिंट्स भी बताए थे, दैट मेल बॉय हिस्ट्री में दिया होगा, हीमाथ्रोसिस की हिस्ट्री होगी, ब्लीडिंग हो रहा होगा उसको, एंड हीमोफीलिया के अंदर वी हैव डिस्कस किया, इसमें सब नॉर्मल आ जाता है, एपीटीटी इज द ओनली थिंग विच इज इंक्रीजिंग इन हीमोफीलिया पेशेंट्स, ठीक है। तो वही है ये, नॉर्मल पीटी है बट इंक्रीज एपीटीटी है, ठीक। इट्स ओके यार, एक आध देखो, 1 or 2 क्वेश्चंस, आपको सब कुछ, इट इन द एग्जाम ऐसा नहीं हो सकता यार दैट ऑल द क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम, इफ आई टेक इट कि मैंने वहां ऐसा बोला था तब वैसा बोला था, वैसा नहीं कह रहा हूं मैं, क्लासरूम टीचिंग के हिसाब से भी इफ यू गो, देन ऑल्सो देर आर सर्टन क्वेश्चंस विच आर डायरेक्टली you can do it, and there are certain questions which you do it by excluding the options, जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए आप बोल रहे हो कि यार ये वाला क्वेश्चन तो, बट एक्सक्लूजन तो कर सकते हो ना, यू कैन डू द एक्सक्लूजन एंड दैट व्हाट इज नेसेसरी, दैट यू आर एबल टू हैंडल इट दैट वे। फिर ये आया था Bernard Soley syndrome is due to which protein defect? Was this the question? अच्छा, ठीक है। शिवम, नॉन हॉजकिंस का क्या क्वेश्चन आया था बेटा, कुड यू प्लीज लेट मी नो दैट व्हाट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम नॉन हॉजकिंस यू गॉट। ओके, इफ दिस क्वेश्चन वाज देयर, तो देखो यार, ये अपन इन द क्लास ऑन पेज नंबर 151, ये दोनों डिजीजेस अपन पढ़ते हैं बेटा, बर्नर्ड सोलर एंड ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्थेनिया। इसके अंदर अपन बात करते हैं, वी ऑलवेज मेक अ डायग्राम ऑफ अ प्लेटलेट एंड वन ट्रायंगुलर एंड वन semicircular receptor for your visual understanding. I always say that, और यहाँ पे लिखते हैं अपन 1B9 रिसेप्टर का डेफिशिएंसी है ना, we always make this। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया,
straight that. ठीक है बेटा, बर्नर्ड सोलियर पूछा है. 2B3A would be Glanzmann's thrombasthenia, but 1B9 receptor would be your Bernard Soler syndrome. ठीक है. उसके बाद, was this question given in the exam? Bilateral hilar lymphadenopathy with eggshell calcification on chest X-ray. Was this mentioned? Bilateral hilar lymphadenopathy with eggshell calcification on a chest X-ray. तो ये लंग्स वाले चैप्टर से आया था कि जावेद, was प्लेटलेट एग्रीगेशन पूछा था. सो एग्रीगेशन के लिए मतलब व्हाट दे मेंशन, डिडंट दे मेंशन बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम? ओके, ठीक है शिवम, आई विल लुक इनटू इट. यू कैन टेक्स्ट मी, ओके, दैट व्हाट वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन, व्हिच, हाउ वाज द क्वेश्चन, इफ यू कैन रिमेंबर, सोच के मेरे को बताना. ठीक है, अगर एक्सेल कैल्सिफिकेशन आया था बच्चे, तो देखो ये अपन करते ही हैं. यू कैन गो एंड चेक योर नोट्स ऑन पेज नंबर 167 ऑफ योर वर्कबुक. यू वुड फाइंड हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, एक्सेल कैल्सिफिकेशन, सिलिकोसिस के साथ करते हैं. ठीक है, एंड आई ऑलवेज टेल यू दैट एचआरसीटी पे ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलती है. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया. फिर दोबारा से सिलिकोसिस. अच्छा, तो यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर दूंगा. आई विल ऐड एन इमेज. कुछ इस तरीके की इमेज थी क्या, वैष्णवी? वॉज द इमेज समवॉट लाइक दिस ओनली? ऐसी इमेज थी क्या कुछ? तो मैं ऐड कर दूंगा बेटा उसको, नो प्रॉब्लम. ठीक है मीमांशा, आई विल ऐड द इमेज. फिर ये वाला क्वेश्चन, क्रॉनिक स्मोकर विद हिस्ट्री ऑफ सीमेंट फैक्ट्री वर्क डेवलप्स मीजोथेलियोमा, एंड देन व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? किस चीज का एक्सपोजर है? वाज दे आस्किंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन? तो इसके लिए अपन ने ना, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द मीजोथेलियोमा, मैंने तुमको पहले ही बताया था, मीजोथेलियोमा के लिए देखो, सेम पेज, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस दोनों से क्वेश्चन आ गया. ठीक है, तो सेम पेज पे वी हैव डिस्कस्ड एस्बेस्टस के साथ दैट द मोस्ट स्पेसिफिक कैंसर एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोसिस इज मीजोथेलियोमा. और मैंने तुमको बताया प्लूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लूरल प्लाक अगर कहीं दिया हो क्वेश्चन में न्यूमोकोनियोसिस के, तो यू हैव टू ऑलवेज गो विद एस्बेस्टोसिस. तो बहुत बढ़िया हो गया. फिर ये तो दोनों क्वेश्चन एकदम फुद्दू टाइप्स आ गए, तो वेरी गुड. मतलब कितना अच्छा है. सो अभी तक वन क्वेश्चन यू हैव सेड कि नहीं है. 22 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस टिल नाउ. वन क्वेश्चन यू हैव सेड कि नहीं आया. फिर ये कलर कोडेड वैक्यूटेनर ट्यूब इज यूज टू कलेक्ट ब्लड फॉर टेस्टिंग क्लॉटिंग पैरामीटर्स. तो इसमें ना, इन अ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, ये अपन ने डिस्कस किया है बेटा यहाँ पे मैंने. और आई हैव टोल्ड यू कि फॉर एनी क्लॉटिंग स्टडीज यू हैव टू गो विद अ ब्लू टॉप. तो दिस, नॉट डायरेक्टली इन अ क्लास आई हैव सेड, बट ये अपन ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में किया है. तो इफ यू हैव सीन दैट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसके अंदर वी हैव कवर्ड दिस. ठीक. फिर पैप्समेयर का फिक्सेटिव. ठीक है, इसमें द आंसर विल बी 95% इथेनॉल. ये भी डायरेक्टली वी हैव नॉट डिस्कस्ड, बट द आंसर विल बी 95% इथेनॉल इन दिस. ठीक. अभी इसके बाद, ठीक है, तो लेवेंडर भी चलेगा. लेवेंडर चलेगा, अगर ब्लू नहीं था तो लेवेंडर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम है. ठीक. अभी आफ्टर दैट, these were three more questions which have been told to me कि Prader-Willi पे there was a question on Prader-Willi. So I just want the number. Please write 26. Was it there? If it is not, just write a no, so that I know कि ये question था या नहीं था. Because okay, no problem. 26 was there. उत्कर्ष सिंह Prader-Willi नहीं था. तो ब्लू लेवेंडर, तो बेटा फिर ब्लू पे जाएंगे.
ठीक है, तो 26 के लिए यू पीपल मेजोरिटी ऑफ यू आर सेइंग कि नहीं था ये प्राडर, ठीक है चलेगा। ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, अच्छा ओके, प्राडर वाज गिवन इन द ऑप्शन नॉट एज अ क्वेश्चन, ठीक है चले, नो प्रॉब्लम। 27 का बताना। 27 ग्लास, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज या फिर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हेपेटोसाइट के अंदर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वाज देयर अ क्वेश्चन लाइक दिस बचे? अच्छा, मेन वन वाज देयर इन द क्वेश्चन, ठीक है। मेन वन का क्वेश्चन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, वॉट एवर यू रिमेंबर जस्ट राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स कि क्या क्वेश्चन था। बट फॉर ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट वाज देयर अ क्वेश्चन, नॉट एन opacity but a ground glass hepatocyte? ओके, तो मतलब हेपेटाइटिस बी के ऊपर क्वेश्चन था। ओके, ऑलराइट, तो ये these two questions were there and I hope all right, and I hope you were, yeah, that's yes, 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 yes. This also I have got to know. अभी मेरे को किसी ने मैसेज किया था that there was a question on a metastatic calcification as well. And I mean, not a metastatic calcification per se or what, but the person said कि सर CKD में calcification पूछा था. Chronic kidney disease having which kind of calcification? Was this the question, guys? कि metastatic calcification with a CKD. CKD question was given and they were asking that what is happening. Just tell me about the 29. Oh, that is okay. All right. All right. So, देखो, these were the questions I could gather. If you have any other question in your mind which came, you just let me know. We have discussed 29 questions here. ठीक है, I am not actually considering the medicine part of which I take. तो आप इसको हटा सकते हो, ground glass hepatocyte and Men-1 syndrome को. So we have discussed 27 questions. Two questions you have said कि जो नहीं आए हैं. So there are 25 questions which we had discussed which came. And I think it's a big number from, as per what the NB says, it is around 13 questions which should come. But if you're getting 25 questions from this workbook of yours, which you have read, it's a good number. And I hope you people have solved the questions. And I'm repeating myself once again, these are not the exact replica of the question. They're the gist of the question, कि भाई ये आया था, and then you have mentioned this. So I hope, ठीक है, whatever else you remember, HBS का ट्रीटमेंट पूछा था, ठीक है मेहमान सर, तो ये भी एक क्वेश्चन है। अब लेट मी नो दी ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली वाज गिवन इन द ऑप्शन, इन द क्वेश्चन की सिकलिंग क्राइसिस दिया है तो ट्रीटमेंट बिकम समथिंग एल्स, और इफ इट इज जस्ट अ सिकल सेल एनीमिया पेशेंट देन ट्रीटमेंट बिकम समथिंग एल्स। सो विल डिस्कस अकॉर्डिंगली। So there were good amount of questions which have come, and I hope you people are happy. I mean, I don't know how many of you have done how many questions right, but I am happy by seeing the questions, and I know that people who have done the classes with me, they would be able to, they must have done the questions right. And on behalf of everyone here at Mist, I wish you good luck, guys, and thank you for showing up, and thank you for, being in this live session. And whoever sees this, God bless you for your results. And please mention in the comments whatever questions and options you remember more, or if you want to correct any question in this, please do that. Okay, thank you. Take a balloon then, and we'll say bye bye.